तेजपुर में एक सनसनीखेज घटना हुई है। दुल्लू सैकिया नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर में पिछले 4 साल से काम करने वाले लड़के काली की पहले हत्या की और उसके बाद उसका शव जमीन में दफना दिया। इस वारदात को उसने बड़ी चालाकी से अंजाम दिया था, लेकिन पड़ोसियों को संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्लू सैकिया को गिरफ्तार कर लिया है। दंडाधीश की उपस्थिति में पुलिस ने गड्ढा खोदकर काली का शव बाहर निकाला। दरअसल कुछ दिन से पड़ोसियों ने जब काली को गांव में नहीं देखा तो उन्हें संदेह हुआ। लोगों ने दुल्लू सैकिया से इस बारे में पूछा तो उसने उन्हें बताया कि बीमारी की वजह से काली की मौत हो गई है। उसने साथ ही बताया कि उसने काली के शव को अपने घर के पीछे जमीन में दफना दिया है। इसके बाद लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और रात को ही पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। ঘটনাটো হৈছিল দুলদুল শইকীয়াৰ ঘৰত হৈছে। ঘটনাটো এজন কালি বোলা মানুহে এজন আছিলে, কাম কৰা মানুহ, কাম কৰাই অহৰহ কাম কৰাই, গৰুৰ কামবিলাক কৰাই, ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা তাক মাৰপিট কৰে, ৰাতিপুৱা ৰাতিলৈকে কৰে কাম, বাচন ধুৱায়, কাপোৰ ধুৱায়, সকলোবিলাক ঘৰৰ কামেই কৰে। খাবলৈ নিদিয়ে, কুকুৰক দিয়া ভাত খায়, আমি পেলাই দিয়া ভাতবিলাক সি খায়, তাক ভালকৈ খোৱা বোৱা নকৰে। মানুহটো বহুত কাম কৰাই অসুস্থ হৈ গ'ল, মাৰপিট কৰে, তাক অলপ পিটি থাকে, ভৰি মস্ত ফুলি গ'ল, খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। তেনে অৱস্থাটো তাক মাৰপিট কৰিয়ে তাক গৰুৰ কামবিলাক কৰাই থাকে। তেখেতৰ মিছেছ মামনি শইকীয়াক এই বাহুত অলপ তাৰ খোৱা কাপোৰবিলাক এই ঘৰটোলৈ লৈ আহিছে, আনি পেলাই তাৰপিছতে এই কামটো কৰিছে নেকি, আমি এনেকুৱা সন্দেহ কৰিছোঁ। আগতেও অকৰা বোলা মানুহ এজন নাইকিয়া হৈছে, কথা ক'ব নোৱাৰে, কাম কৰা মানুহ, সি ক'ৰবাৰ পৰা ধৰি আনে। দুলদুল শইকীয়াই ৰেল ষ্টেচন বা ক'ৰবাৰ পৰা মানুহ, এনেকুৱা মানুহবিলাক মাৰি আনে। মই সেইখিনি দেখিছোঁ। তাৰ ভৰিবিলাক ফুলি আছে, খুব কোবাই মানুহটোক, আৰু এনেকৈ মানে টিকাবিলাকত খুব খুচি ঠেলি মানুহটোক আনে। তাৰপৰা যেনেকৈ মানে দাগিব দিয়ে, মানুহটো যাবই নোৱাৰে। এইজন মানুহ যে নিজে মৰিব এইটো কথা নহয়, তেওঁক মাৰি পেলোৱা হৈছে সন্দেহ।